Hello students, so welcome back again to my class Pets of Wisdom. So today in this session I am going to conduct a quiz that is completely based on tenses. So in this quiz I have taken all the questions from tenses only. So in this way you will come to know about our mistakes and you will also come to know that how much you are prepared for tenses. Okay, so let us quickly start our quiz. That is not the pencil I dash search for, was searching for, or had searched for. So that is not the pencil I was searching for will be the correct answer. ये वही पेंसिल है या वो वही पेंसिल है जिसे मैं ढूंढ रहा था. My car frequently is breaking. My car is breaking down frequently. Was breaking down frequently or breaks down frequently. So frequently with this word adverb, often, frequently, obviously, it is very clear the tense is in present tense. So simple present tense, my car breaks down frequently. ठीक है. अब देखिए कभी कभी एक और भी कंडीशन आती है कि कभी कभी फ्रिक्वेंटली पास्ट इंडेफिनिट भी में भी यूज हो जाता है, कभी कभी रेयरली अदर टेंसेस में भी यूज हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे पहचानेंगे? हमेशा आगे वाला जो सेंटेंस है उस पर ध्यान दीजिएगा. इसके पहले या आगे जो भी कनेक्टेड सेंटेंसेस हो उसको देखते हुए ध्यान रखिएगा. ठीक है. अब सपोज करो ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, माई कार डैश फ्रिक्वेंटली when I bought it. ठीक है, जब मैंने इसे खरीदा था. तो अब ऐसी कंडीशन में हम, क्योंकि bought it ये पास्ट टेंस है ना, सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाता है कि टेंस जो है वो पास्ट में हो गया. तो उसमें इज ब्रेकिंग ब्रेक्स डाउन तो लिख नहीं सकते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में फिर वो क्या हो जाता, ब्रोक डाउन यानी कि पास्ट टेंस में हो जाता है. ठीक है, ब्रेक तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में हो जाता है. ठीक है, माई कार ब्रोक डाउन फ्रिक्वेंटली व्हेन आई बॉट इट. ठीक है, तो जब मैंने इसे खरीदा था उस समय अक्सर खराब हो जाती थी. द चिल्ड्रन डैश स्टैंडिंग इन द रेन फॉर 2 hours. Is standing, has been standing, or have been standing. So obviously for 2 hours timing is over there. And dance, the children have been. Children plural है तो have been. The bus had started before we dash at the bus stop. The bus had started before we dash at the bus stop. Before we arrived at the bus stop, we were arriving, or we had arrived. So the bus had started before we had started. Before, which tense it is? It is past perfect tense. Very clear. Okay, तो had started यानी कि past perfect. Had started past perfect before. So what should be the next sentence? In which tense the next sentence should be? Obviously in past indefinite, simple past है ना. तो the bus had started before we had arrived at the we arrived at the bus stop. We arrived at the bus stop. सेकेंड टेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ना, बिफोर भी आ गया है. ठीक है, the play had just begun, have just begun, or has just begun. Just clearly indicates that this action has been occurred just before some time, है ना. And the play, और just की बात हो रही है तो obviously present की बात हो रही है. Has just begun. The play has just begun. Who dash you this? I did not appear in this test.
who did tell you this, who told you this, or who tells you this. So obviously the next part of the sentence is showing past tense. So obviously who told you this, who told you this would be the correct answer, and did will not be there, as with who we never place do or did. who के साथ कभी भी do या did नहीं आता है, ठीक है, हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है. with remaining WH family verbs, obviously we place do first before subject. where do you go, है ना, where did you go, where did you go, है ना. लेकिन हु अकेला एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ कभी भी डू या डिड का यूज नहीं होता है. डायरेक्टली इसका जो रूल होता है वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की तरह चलता है. क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यू पास्ट में चल रहा है तो वो टोल्ड यू विल बी द करेक्ट आंसर. The milkman dash today, so far I know. Do not come today, will not come today, does not come today. So obviously so far as I know, जहां तक मुझे पता है कि मिल्कमैन आज नहीं आएगा, will not come. Life dash, not what we think, it is what we make it. Life was not, had not been, or is not. So obviously life is not what we think it. What we think it is what we make with it. Okay. यूनिवर्सल ट्रूथ को बता रहा है, हम ये कह सकते हैं पेरेनियल थिंग दिखा रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है ना, तो इसी वजह से सिंपल प्रेजेंट में होगा. He spends a lot of time in his studies but dash nothing. Know nothing, knows nothing, or knew nothing. He spends, again tense has been started in simple present tense. He spends a lot of time in his studies but उसकी कोई भी हैबिचुअल, उसकी हैबिचुअल सेंटेंस क्या कह सकते हैं हम, उसकी कोई हैबिट दिखा रहा है, उसकी कोई क्वालिटी को दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में ही कंटिन्यू रहेगा. He spends a lot of time in studies but, again because pronoun is he, that is singular in number, so he knows nothing will be the correct answer. Did this boy dash while dash the bus? Did this boy fell down while catching the bus? Did this boy fall down while catch the bus? Or did this boy fall down while catching the bus? So did, because did is there, so obviously first form of the verb will be placed. Okay, तो first form यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, C में भी है, but after that while always take V4, while always take V4, है ना, first form of the verb ing. Okay, तो did this boy fall down while catching the bus? Who dashed to you when I returned to class? Who was talking to you? Who had talked to you? Who had been talking to you? Okay, now had talked to you नहीं आएगा, क्योंकि हालांकि when I returned to class ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा. दो पार्ट है यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ना तो टाइमिंग शो कर रहे हैं, हु यहाँ पर क्या है, कंडीशन शो कर रहे हैं, वो भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की. ठीक है. सेकंड तो टाइमिंग नहीं शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैड बीन तो नहीं होगा, है ना. कंडीशन शो कर रहे हैं. अब सेकंड थिंग क्या है कि हैड टॉक्ड भी नहीं हो सकता, हैड टॉक्ड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव की कंडीशन शो कर रहे हैं कि जब मैं क्लास में लौटा तो उस समय
तुमसे कौन बात कर रहा था, है ना। हु वॉज टॉकिंग टू यू, हु वॉज टॉकिंग टू यू व्हेन आई रिटर्न टू क्लास। ओके। 13. Who dashed to you by I returned the class? Who was talking to you? Who had talked to you? Or who has talked to you? ओके अब यहाँ पर देखिए बाय, यहाँ पर बाय जो है वो क्या है, यहाँ पर बाय क्या है, टाइमिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर बाय टाइमिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो who was talking to you by I returned the class, who has talked to you or who had talked to you, सॉरी यहाँ पर had, who had talked to you, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि by I returned the class है ना, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या दिखा रहे हैं कि जब मैं लौटा, यानी कि जब तक मैं लौटा तब तक तुम्हें तुमसे कौन बात कर चुका था, ठीक है। जब मैं इस क्लास में लौटा तब कौन तुमसे बात कर चुका था, यानी कि मेरे क्लास में लौटने से पहले तुमसे कौन बात कर चुका था। यहाँ पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी ऐसे भी टाइमिंग शो कर सकते हैं, हालांकि ये सिंस या फॉर होना चाहिए था ना, सॉरी सिंस फॉर नहीं, बिफोर और आफ्टर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बिफोर और आफ्टर, ठीक है, बिफोर या आफ्टर शो होता, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर या आफ्टर शो ना करके हमारे बाय का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, उन्होंने क्या दिखाना है, तब तक, जब तक मैं लौटा तब तक तुमसे कौन बात कर चुका था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर होगा हु हैड टॉक्ड टू यू बाय आई रिटर्न द क्लास। We dash go out only when the rain stops. We shall go out, we can go out, or both are correct. Okay, so actually both are correct. We can go out only when the rain stops, or we shall go out only when the rain stops. Both are correct. हालांकि कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, बट इस तरह से भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। On July 31st, 1990, they dash for 20 years. They are marrying, they were marrying, they married for. ओके अब यहाँ पर देखिए पास्ट ऑन जुलाई, ऑब्वियसली टाइमिंग से क्लियर है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए, तो आर मैरिंग तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। ऑन जुलाई 31st, 1990, दे वर मैरिंग फॉर 20 ईयर्स भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा दे मैरिड फॉर, दे मैरिड फॉर, यानी इसका मीनिंग ये होगा कि आज से 20 साल पहले उन लोगों ने इस डेट को शादी की थी, ठीक है। तो दे मैरिड फॉर 20 ईयर्स, वर मैरिड नहीं होगा। माई फ्रेंड डैश बाय जुलाई 31st, 2006। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक अपना क्या कहना चाहिए, प्रपोजिशन चेंज हो जाने से या फिर कंडीशन चेंज हो जाने से। माई फ्रेंड हैज मैरिड, विल बी मैरिड, हैड बीन मैरिड, तो यहाँ पर होगा 31 जुलाई 2006 तक मेरी फ्रेंड की जो है शादी हो चुकी थी, तो हैड बीन मैरिड होगा, ठीक है। फ्यूचर तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑलरेडी पास्ट की दी है। प्रेजेंट भी नहीं होगा क्योंकि डेट पास्ट की दी है, तो ऑब्वियसली पास्ट का होगा। और पास्ट में भी किस में जा रहा है, ये जा रहा है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, यानी कि टेंस तो हमारे पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में दिया है इन्होंने। माई फ्रेंड हैड बीन मैरिड बाय जुलाई 31st, 2006। हाउ मेनी आवर्स डैश ऑन दिस वॉल फॉर, how many hours have been you breaking, has been you breaking, or have you been breaking? So obviously have you been breaking, have you been breaking, have and been, it is broken, it is divided, and in between we place subject. Okay, तो जब भी दो वर्ड में एक फ्रेज के रूप में कभी भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि हाफ वर्ड हमें मीन्स उस फ्रेज का एक वर्ड हमें पहले रखना होता है सब्जेक्ट से, और एक फ्रेज और एक वर्ड बाद में रखना होता है, ठीक है।
she never brought herself to her country, to betray her country, to betray her country, to has betrayed her country. She never brought herself to obviously 2 shows infinity 2 plus v1. With 2, if there is any verb, obviously it will be placed only v1, betray. Okay, तो she never brought herself to betray her country. ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 2b होता ना, तो 2b होता तो यहाँ पर v3 लगता, इस चीज का भी ध्यान रखना. अगर सिर्फ 2 है तो v1, 2b है तो क्योंकि 2b पैसिव वॉइस में चला जाता है और पैसिव वॉइस में हमेशा v3 का यूज होता है, इसीलिए. ठीक है. My brother will have finished his lunch when I dash mine. When I finish his mine, when I finish mine, or when I finished mine. So will have is showing future perfect. Will have is showing future perfect. Okay. When I dash mine, जब मैंने अपना खाना खत्म किया, यानी कि बिफोर की कंडीशन आ रही है. ठीक है, यहाँ पर एक्शन जो भी है वो पहले हो रहा है. ठीक है, तो क्योंकि वो पहले हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट के साथ दूसरा टेंस कौन सा यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना. प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है. तो क्या होना चाहिए? अब सेकेंड थिंग क्या है? फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा v1 का यूज होता है. तो फिनिशेस नहीं होगा, फिनिश होगा. माई ब्रदर विल हैव फिनिश्ड माई लंच व्हेन आई फिनिश माइन. यानी मेरे खाना खत्म करने से पहले मेरा भाई पहले से खा चुका होगा. Who dash come to see you? Sorry, who dash come to see the match after we shall have arrived? Again, future perfect tense, interrogative sentence. Who will not come? So obviously will and will, or already we have got shall, तो future तो नहीं बनेगा. अब क्या होगा? Who did not or who does not. Who did not, तो again because we have to take present definite tense. Now here in this condition present indefinite tense will be placed before because we are having after. So who does not come to see the match after we shall have arrived. By whom dash for 2 years. By whom will you been studying time? By whom will you been studying for 2 years? By whom are you been studying for 2 years? By whom had you been studying for 2 years? So obviously by whom for 2 years, टाइमिंग दे दिया है ना. had you been, by whom had you been studying for 2 years? Hey girls, what dash about here? Hey girls, what will you be fighting about here? Are you fighting about here? Have you been fighting? Have you been fighting? Okay, so will you be fighting? So will you be fighting तो नहीं हो सकता, किसी ने किसी को देखा है तब बोला जा रहा है यहाँ पर क्यों लड़ाई हो रही थी. Are you fighting or have you been fighting? We have to choose from these two phrases. So because timing has not been there, have you been fighting correct हो सकता था अगर यहाँ पर कहीं भी आसपास या आगे पीछे के सेंटेंस में कहीं टाइमिंग होता. ठीक है, टाइमिंग नहीं है. एंड अबाउट है, ठीक है, अबाउट यानी किसी मैटर पर बात लड़ाई हो रही है. सो What are you fighting about here? तुम यहाँ पर किस बारे में, किस वजह से लड़ रही हो. Okay. Hey boys, what dash here since last an hour? Hey boys, what dash since here
Here, since last an hour, what have you played? What had you played or what have you been playing? So, hey boys, what have you? अब यहाँ पर देखिए टाइमिंग आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर हैव बीन का यूज होगा. हे बॉयज, व्हाट हैव यू बीन प्लेइंग सिंस लास्ट एन आवर? Who dash come to see the match after we shall have arrived? Who dash come to see the match after we shall have arrived? After, okay. After, again, ये सेंटेंस तो हो चुका है. Yes, the sentence has been completed. Okay, so these are some sentences. प्रश्न होगा for today that I have taken from tenses only. Meet you soon with the next exercise. I may take any grammar part, determiner or models or any part. So you can also share your views. So you can also tell on which topic I should make quiz, next quiz. Okay. Thank you. Happy learning.